Hello students, first three questions of exercise 5.3 we have completed. Today we have to start from question number 4. Question number 4 is how many terms of the AP 9, 17, 25 and so on must be taken to get a sum of 636. It is very important question from examination point. So many times it is repeating in the exams. How many terms of the AP? ठीक है, तो फ्रॉम हेयर इट इज क्लियर दैट वी हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ एन. हाउ मैनी टर्म्स, कितनी टर्म्स है ना, एन वैल्यू वी हैव टू टेल. एपी इज गिवन टू अस 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गेट ए सम ऑफ 636. मतलब सम हाउ मच इज रिक्वायर्ड, 636. तो सी वट वैल्यूज आर गिवन टू अस. एपी गिवन है, सो वहां से आ गया दैट फर्स्ट टर्म इज 9, ए वैल्यू होगी 9, कॉमन डिफरेंस हो गया 17 माइनस 9 दैट इज 8 एंड सम ऑफ सम टर्म्स है ना, सम ऑफ एनी टर्म्स, पता नहीं कितनी टर्म्स है, सो दैट इज एस एन दैट इज गिवन टू अस 636. क्लियर, दिस इज गिवन टू अस. वी हैव टू टेल नंबर ऑफ टर्म. तो सी हाउ वी विल सॉल्व इट. वी आर इट इज गिवन टू अस ए डी एंड एस एन. तो ए एंड डी द जस्ट वैल्यूज कैन बी पुट इन सम formula that can be used, that is only Sn, because Sn value given है, so that only we will expand. Sn formula you know, n by 2 2a plus n minus 1 into d. You can see I have written here. Now put the values which values we know. Sn हो गया 636, n value we don't know, n by 2 as it is, 2 into on the place of a आ गया 9, n minus 1, d value is 8. ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व कर दिया एंड आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखो आफ्टर सॉल्विंग वी हैव गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8n square plus 10n minus 1272. Clear? And we can see that all the three numbers which are in this equation can be divided by 2. All are multiples of 2. So we will divide it by 2. It is not compulsory, but if we will divide by 2 then the equation will be simplified in some smaller numbers ना, छोटे हो जाएंगे numbers, then it will be easy to solve. So divide कर दिया by 2 and we get 4n square 5 plus 5n minus 636. So we have got a quadratic equation. And next you know how to solve a quadratic equation in 4th chapter we have done. Using middle term split method we will find factors of it and we will get the value of n. So you can see I have solved here, you will also solve it by yourself. And after solving we get that because quadratic equation है, so we will get two roots आएंगे ना, and same here we get two roots, मतलब two values of n we have got, that is n is equal to minus 53 by 4 and n is equal to 12. ठीक है, दो values आ गई. And we can see because n की है number of terms है, so number of terms can never be negative. अच्छा, तो दोनों ही केस हो गए, माइनस 53 by 4 आ गया. इट इज ऑल्सो इन फ्रैक्शन, इट इज ऑल्सो नेगेटिव. ठीक है, सेपरेट ऑल्सो दे आर नॉट फेवरेबल फॉर द वैल्यू ऑफ एन बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी नेगेटिव भी नहीं हो सकती. ठीक है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन बिकॉज पूरी होती है ना नंबर ऑफ टर्म्स. तो देयर विल बी कि 10 टर्म्स है कि 20 टर्म्स है. इट इज नॉट देयर कि फ्रैक्शन इज 10 and half टर्म्स. दैट डज नॉट मेक एनी सेंस. सो दिस वैल्यू वी विल कैंसल. We have to write it also. देखो मैं लिखा भी है, number of terms can never be negative and in fraction, so we will take only one value of n, that is 12. So in this way we will solve. Understand? ठीक है, next question देखो. In next question it is given that first and last term of an AP are 17 and 350 respectively. First and last, first हो गया A, last we don't know on which number it is, so we will write it an. Common difference is given 9 and we have to tell value of sum of the 38 terms. In this sum we have to find sum of firstly he has said कि how many terms are there. If in this way it is there कि first term this है, last term this है, तो how many terms are there and what is their sum. Both things we have to find. So we can see A, an and D is given to us. तो यहाँ से क्या पता चल गया बेटा, दैट वी हैव टू यूज फर्स्टली ए एन फॉर्मूला बिकॉज ए एंड डी आर द वैल्यूज ओनली, जस्ट वी हैव टू पुट. वी कैन यूज हियर, वी हैव टू यूज हियर ए एन फॉर्मूला. In this way you have to
find out that how we are going to solve this sum. तो an formula we will use firstly. an formula हो गया a plus n minus 1 into d. Put the values whatever we know and solve कर दिया. We will get n value 38. n की value कितनी आ गई 38. तो now we have to find sum of 38 terms. 38 आ गया तो sum of 38 terms that is s38. s38 find कर लेंगे. formula using Sn formula n by 2 2a plus n minus 1 into d. Clear? So put the values 38 by 2 2 into a 17 है plus n minus 1 d is 9. Put कर दिए values solve कर दें. Clear? And we get that sum of 38 terms is 6973. Clear? So I hope you understand. Next term देखो, next sum sorry. Second and third term of an AP are 14 and 18. Then find the sum of 51 terms. Second and third term. So when we will read the question, then it should come in our mind that two consecutive terms are given to us. Consecutive मतलब ना continuous term है. देखो second and third दो लगातार terms given है, तो we can find the difference by subtracting that terms. ठीक है, common difference आ जाएगा when we will subtract these two terms. तो common difference, because common difference की definition क्या है? The difference between any two consecutive terms of AP is called common difference because that is same for every case. So बेटा D आ गया A3 minus A2 which are 18 and 14. 18 minus 14 आ गया 4. D की वैल्यू आ गई 4. ठीक है. Now second and third term is given and I have told you कि any term in the AP can be written as मतलब because in formula there is n minus 1. So हम क्या करते हैं हर टर्म को 1 माइनस करके लिख लेते हैं. तो लाइक सेकेंड टर्म है वी विल राइट इट a plus 1d. थर्ड टर्म है वी कैन राइट इट a plus 2d. एक माइनस कर देना. फोर्थ है a plus 3d. तो एनी वन वी कैन यूज. आई हैव यूज्ड हियर सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म वी विल राइट a plus 1d and 1 you know no need to write because 1 I'll multiply that will be same. So we will write it a plus d. a d value we know, d value पुट कर देंगे वहाँ से a की वैल्यू आ गई. तो now a and d both values are with us. We have to tell sum of 51 terms. Sn formula we will use and Sn formula again n by 2 2a plus n minus 1 into d. Put कर दो values. n is 51, a is 10, d is 4. Put कर देंगे values. Solve करता plus minus we will do and we can see answer आ गया 5610. Clear? Easy है. So I hope you understand these all the questions. And using these questions you have to solve other by yourself and you will complete up to question number 10. Thank you.